Hello everyone. So this is the last part of chapter number 3, which is nothing but is the salient feature of the constitution. Okay, which is from I'm Laxmikanth. That you already know that. So this is what myself. So let's finish this chapter. I'm already flooded with this chapter. Okay, so let's see the last part of chapter number 3. Okay, so in the last video we have seen three different criticism. Remaining criticism will finish today and we'll bind up this chapter. So the fourth criticism is an un-Gandhian constitution. अब देखिए गांधी जी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्टी नहीं थे, ठीक है। तो अब वो पार्टी नहीं थे तो उनकी जो फिलॉसफी थी या वो जो सोचते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो बट उनके जो लोग करीबी थे या फिर जो लोग उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके प्रिंसिपल्स को मानने वाले लोग थे, वो लोग ऐसा बोलते थे कि इट इज अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना गलत होगा। सो इफ यू वांट टू मेक चेंजेस यू हैव टू बी देयर। वो थी नहीं तो उनकी 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 सोच कैसे आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन-गांधीयन because it does not contain the philosophy of the ideals of Mahatma Gandhi, the father of the nation, of the Indian nation, ठीक है। अब कुछ लोग थे अलग अलग चीजें बोलते थे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। दे ओपन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ड अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। देखिए उस टाइम भी ये सब चीजें नहीं थी, बट 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। 74th म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, बट फॉर द विलेज पंचायत ओके वी हैव 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट that has been done in 1992 and which has been implemented in entire India, but still in 1959 itself it has been inaugurated in Nagaur district of Rajasthan, and it has been in the same year it has been implemented in the Andhra Pradesh. ओके, तो ऐसा बोलना कि हाँ ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला गया था कि इट वाज अन-गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इवन गांधी जी की भी जो फिलॉसफी थी उसको इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी चीजों को डाला गया है, ठीक है। तो ये बोलना इट इज लाइक कंप्लीटली रॉन्ग। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हनुमंतिया said that is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and did not envisage, ठीक है। टी प्रकाशन another member of the Constituent Assembly attributed this lapse to the Ambedkar non-participation of the Gandhian movement and antagonism towards the Gandhian idea, ठीक है। ये लोग देखिए जो भी बोले ऐसा नहीं है। डीपीएसपी अगर आप देखोगे तो डीपीएसपी में जो भी फिलॉसफी ऑफ गांधी जी थी वो सब सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बोलना कि इट वाज अन-गांधीयन, सो आई डोंट थिंक इज करेक्ट। This is my view, okay, so those who are listening your view can be different, so don't get my idea what I'm thinking about that, just think about what you are thinking। एलिफेंटाइन साइज, ठीक है, मतलब काफी बड़ा बल्कि साइज था इसका। ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा ही नहीं क्योंकि इतनी वास्ट कंट्री है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग भाषा है, तो ऑब्वियसली बात है जब सबके लिए वो चीजें मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा होगा ही। ओके, सो ओके, एलिफेंट इन साइज ऐसा बोला जाता था। द क्रिटिक्स सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बल्की एंड टू डिटेल एंड कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ओके सर, Ivor Janning, a British constitutionalist, observed that the provisions borrowed were not always well selected and that the constitution, generally speaking, was too long and complicated. Achha. In this context, H.V. Kamath, a member of Constituent Assembly, commented, "The emblem and the crest that we have selected for our assembly is an elephant. It is perhaps in consonance with that our constitution too is the bulkiest that the world has produced." He said, "I am sure the House does not agree that should make the constitution as elephantine one." देखिए
अब यूएस में एक स्टेट है अलाबामा, ठीक है। आपको पता है कि यूएस में उनकी स्टेट का भी अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और पूरे कंट्री का तो है ही। अलाबामा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, इंडिया वाले से भी बड़ा है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने शुरू में ही बोल दिया कि बड़ा तो रहेगा ही ना, इतनी चीजें जब हैं तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। जब सब चीजों को अच्छा करना था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स पूरा खराब करके गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट शुड रिड्यूस, आई विल नॉट से कंप्लीटली खत्म कर देना, बट खत्म करने में टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट द प्रॉब्लम द इंडियंस वर फेस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, those problems should not come again. Okay, so it has to be reduced like anything. So that's why it will be, if they will consider all the problems, all the scenarios, this is going to be lengthier. Okay, so जो कि हुआ ऐसा is that is the reason of becoming bulky. 4 पेज का तो नहीं बना दोगे ना जैसे यूएस का है, ठीक है। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। अब देखिए उस टाइम पे जो हमारे जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो जो भी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे जो एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ लोग लॉयर थे, मतलब इवन नेहरू थे और भी बहुत से लोग थे, ये सब लोग बाहर से पढ़ के आए थे, ठीक है। मे बी उस टाइम पे ऐसा होता होगा कि लॉ काफी लोग प्रेफर करते हैं, बीच में जैसे कि इंजीनियरिंग खूब लोग प्रेफर करते थे, आईटी सीएस की बूम आई हुई थी, सब लोग सीएस में जाना चाहते थे, तो उसी टाइम पे हो सकता है कि लॉयर की बूम रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब लॉ ही पढ़ेंगे तो सब लोग लॉयर ही रहेंगे। अब ये बोल देना कि सिर्फ पैराडाइज ऑफ लॉयर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो उस टाइम में इंजीनियर्स भी रहे होंगे, वो लोग नहीं पार्टिसिपेट किए उसमें, तो ये बोल देना कि इट वॉज पैराडाइज ऑफ लॉयर, ठीक है। अब लोग थे तो आप बोल दो, बट देवर प्रोफेसर्स, प्रिंसली स्टेट वाले भी लोग थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉयर्स थे, बट हाँ मेजॉरिटी लॉयर्स की थी। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू legalistic and very complicated. They open that the legal language and phraseology adopted in the constitution make it is a complex document. ये तो सही बात है, क्योंकि एज अ नॉर्मल ह्यूमन और नॉर्मल इंडियंस जिसको एजुकेशन, आई विल नॉट से इवन, जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी मीनिंग आप पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको गूगल करना पड़ेगा, अभी तो गूगल आ गया, ठीक है, उस टाइम में गूगल नहीं था। यू हैव टू सर्च ईच एंड एवरी वर्ड, हो इसका मीनिंग ये होगा उसका होगा, फिर आप जाके इंटरप्रेट कर पाओगे, ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि वो उस जो भी लिखा हुआ है उस चीज को हम लोग सही से इंटरप्रेट कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो और ज्यादा चीजों को इलाबोरेट करते जा, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आया हमारा, ठीक है। शुरू में तो नहीं था, वो बाद में आया, तो इट इज ड्यू टू ऑफ आई विल नॉट से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, उसको जो समझना है उस चीज से वो इवॉल्व हुआ है, ओके। The same Sir Ivor Janin called its lawyer paradise. In this context, H.V. Maheswari, a member of Constituent Assembly, observed the draft tends to make people more litigious, more included to go to law court, less truthful and less likely to follow the method of truth and non-violence. If I may say so, the draft is really a lawyer paradise. It opened up vast avenues of litigation and will give our able to ingenious lawyer plenty to work to do. ठीक है, मतलब इसको इतना मतलब नहीं है इसको समझने, कहने का मतलब ये है कि देखिए उस टाइम पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, काफी लोग लॉ में जाना चाहते थे, ठीक है। तो लॉ में जाना चाहते थे, लॉ वाले ही लोग ज्यादा होंगे, फिर देवर क्रांतिकारी भी वही लोग थे, फिर बाद में वही लोग इंडिपेंडेंस मिला, फिर वही लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी गए, ठीक है। अब इनका ये भी बोलना है कि जो लॉयर्स होते हैं झूठ बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ सबको अब जनरलाइज, यू कैन नॉट जनरलाइज, ठीक है।
कोई एक बोलता है तो अब 50 हैं तो सब थोड़ी ना बोलते होंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। Or similarly, P.R. Deshmukh, another member of Constituent Assembly, said, I should, however, like to say that the draft of articles that have been brought before the House by Dr. Ambedkar seems, to my mind, to be a far too ponderous, like a ponderous term of a law manual. ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि ये जो है ना law manual है. A document dealing with a constitution hardly use so much of padding and so much of verbiage. Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual but a social political document, a vibrating, pulsating and life-giving document. But to our misfortune, that was not to be, and we have been burdened with so much of word and words which could have been very easily eliminated. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो लोग बोल रहे हैं ऐसा ही है, ये जो है हमारा इट इज नॉट अ लॉ मैनुअल, ऐसा भी बोला जा रहा था, ठीक है। मतलब ये चीज जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, ठीक है। इट इज नॉट अ लॉ मैनुअल बट इट इज सोशल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो वाइब्रेटिंग है, इट इज पल्सेटिंग है, इट इज अ लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये जो बोल रहे हैं वो चीज is completely correct, but yeah, ठीक है। These are the 6 different criticism that has been raised during the Constituent Assembly during the making of this constitution, or you can say the after making of the constitution. But anyway, कुछ अच्छी चीजें होंगी तो कुछ खराब चीजें भी लोग निकालेंगे, ठीक है। किसी को कोई भी चीज परफेक्ट नहीं लग सकता है. So anyway, so these are the criticism, and with this video we are this chapter number 3. So next chapter 4 is nothing but is the preamble. So we'll see the preamble, okay, in the next video. Thank you.